Hello everyone. So in this video students, we will be discussing important current affairs for 2nd and 3rd of October. The session will be quite interesting and important. So stay tuned till the end. In this video, we will be talking about PM Modi who has laid foundation and dedicated multiple projects worth 11,200 crore rupees for in Maharashtra. Then we will be talking about the National Conference on PESA Act has been inaugurated in New Delhi. Then India has ranked 39th in the Global Innovation Index. We will be talking about our India who has been elected to the steering committee of the Globe Network. We will be talking all these things in this video and it will be quite an interesting session for your competitive exams. So stay tuned with us till the end. In this video, a total of 15 important current affairs will be discussed. Also students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. The content we provide on daily basis is uploaded at 5 a.m. in the morning. And this video that we are uploading daily is very important and will be very beneficial for your competitive exams. So that's all for the day students. Now let's start with our video. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. So let's start with national affairs. PM Modi has laid the foundation stone and dedicated multiple projects worth 11,200 crore rupees in the state of Maharashtra. Now, which are these projects that we are talking about? First is your Pune metro section. Correct. This will be from the district court to Swargate. This marks the completion of the Pune metro rail project, that is the phase 1, and laid the foundation stone of the Swargate to Katraj extension of Pune metro phase 1. So this is first thing. Second, PM Modi also dedicated to the nation Bidkin industrial area. Correct. And it will be in Maharashtra. Third, PM Modi inaugurated Solapur airport and laid the foundation stone for the memorial for Kranti Jyoti Savitribai Phule's first girls school, that will be in Bhidewada. Right. So these are the three things that you need to remember. Apart from this, remember this Bidkin industrial area, as I mentioned, it is in where? It is in Maharashtra. It is situated 20 kilometers south of Chhatrapati Sambhaji Nagar in Maharashtra, and this will be an important economic hub in Marathwada region. Next, Solapur Airport. PM Modi inaugurated this Solapur Airport, which has improved the connectivity, making Solapur more accessible to tourists, business travelers and investors, and it is catering to more than 4.1 lakh passengers annually. Third is memorial for the Kranti Jyoti Savitribai Phule's first girls school, and this has been at Bhidewada. This memorial will serve as the tribute to the social reform movement and will inspire the future generations. Correct. If we talk about Maharashtra state, who is the Chief Minister of Maharashtra? Eknath Shinde. Who is the Governor of Maharashtra? CP Radhakrishnan. What is the name of the airport here? That is Akola Airport and Chhatrapati Shivaji International Airport and Aurangabad Airport. Then there are two UNESCO heritage sites also in Maharashtra. Which are they? Ajanta Caves and Ellora Caves. Important one. Right. Moving on. Next is Minister of State Professor SP Singh Baghel has inaugurated National Conference on PESA Act in New Delhi. First of all, what is this PESA? PESA stands for Panchayat Extension to Scheduled Areas. That is your PESA Act. This PESA Act was implemented, or it came in 19
1996. Correct. So recently, Professor S.P. Singh Baghel, as you can see him in the picture here, he has inaugurated and addressed a national conference on this Panchayat Extension to Scheduled Areas Act of 1996, and the event for this national conference was inaugurated where? It was inaugurated at Dr. Ambedkar International Center, that is in New Delhi. And if we talk about this conference witnessed the launch of PESA GPDP. GPDP is a portal, that is your Gram Panchayat Development Plan portal. Portal means it is a website that has been launched here. Along with this, 7 action-oriented specialized training modules. Modules means books, digital books, e-books, PDFs has been launched that will enhance the effectiveness of this Gram Panchayat Development Program and Training Initiative. Right, this Ministry of Panchayati Raj has also introduced various initiatives like the Functional Activity Mapping Dashboard for monitoring state actions on 29 subjects outlined in the 11th schedule of the Constitution. Right, so this PESAX National Conference has been inaugurated, right, and it was inaugurated by whom? S.P. Singh Baghel. It was inaugurated where? At Dr. Ambedkar International Center, that is in New Delhi. Correct, take a note of this. And apart from this, we also saw a website of this Gram Panchayat Development Plan was launched, as well as 7 modules has been launched that will be the training modules. Then apart from this, students, we are talking about Pradhan Mantri Janman Yojana. Right, this is a central government scheme, and remember, Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved this Yojana, and center has allocated 24,104 crore rupees for this from financial year 24 to 26 under the Development Action Plan for Scheduled Tribes. Right, now what is this PM Janman Yojana? See, this Yojana aims to provide essential amenities that includes your secure housing, clean drinking water, sanitation, telecom connectivity, enhanced roads, and so on. So this is your Pradhan Mantri Janman Yojana. Next is Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan, that is PM JUGA. Here cabinet has approved 79,156 crore rupees, out of which central government will be providing this amount and the state government will be providing this amount. The main objective of this scheme is to improve the socio-economic conditions of the tribal communities by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. So to sum this up, we can say the main aim of this Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan is to uplift and improve the conditions of the tribal communities. Next is international affairs. India has ranked 39th in the Global Innovation Index for 2024, whereas Switzerland secured the first position 14th consecutive time. So here we are talking about Global Innovation Index. This index talks about the countries that are doing well in innovation. That means they are pursuing research and development, and with research and development, they are coming up with various use cases in different sectors, in different industries, in different technology. Here, so India stands at 39th position in this Global Innovation Index, whereas Switzerland, they have secured the first position, and it is for 14th consecutive time that Switzerland has secured the first position. This Global Innovation Index is released by which organization? It is WIPO, WIPO. WIPO stands for World Intellectual Property Organization, and they have released this Global Innovation Index. Next thing to remember is that this is the 17th edition of this Global Innovation Index released by WIPO. So 17th edition released by WIPO. India stands at 39th position, and this is the data of 133 economies, whereas Switzerland secured the first position for 14th consecutive time. If we talk about WIPO, who is the Director General here? Darren Tang. Where is the headquarter of WIPO? It is in Geneva, Switzerland. When was this WIPO established? 1967. Next. And here you can see top 5 countries. First Switzerland, second Sweden, third USA, fourth Singapore, fifth UK, and on 39th is our India. Next.
Then if we look at some of the key points here, remember India remains the top innovation economy in the central and the southern Asian region. Also, India ranks first in the lower middle income groups and outperformed innovation for the 14th consecutive year. India has also ranked 4th in the World Intellectual Property Organization's Science and Technology Cluster ranking, whereas Mumbai, Maharashtra ranked 56th, Delhi 63rd, Bangalore 82, Chennai 84 are listed among the world's top 100 science and technology clusters. It is topped by Tokyo, Yokohama of Japan. Moving on. Next, India elected to the steering committee of the Globe Network. I repeat, India, our country, has been elected to the 15th member group, that is Globe Steering Committee. Right? This Globe Network is your global operational network of anti-corruption law enforcement authorities. And here, India was elected to the steering committee of Globe Network during the 5th plenary meeting and the 8th steering committee meeting of the Globe Network that was held where this question becomes important. So this 5th plenary meeting and 8th steering committee meeting of the Globe Network was held in Beijing, China. Right? And during which India was elected as a member to this 15-member committee of the steering committee. Then apart from this, if we talk about this Globe Network, it was officially launched in 2021 on 3rd of June, and this was during a special event at the United Nations General Assembly special session against corruption. It includes 121 member countries and 219 member authorities. Apart from this, Ministry of Home Affairs serves as the central authority for the Globe Network in India. Correct? Take a note of this also. Here remember, this Globe Network, it is supported by United Nations Office Against Drug and Crime, and it has emerged as a unique platform. This Globe Network, it has emerged as a unique platform where agencies from across the world, they share their best practices, criminal intelligence, develop various strategies, and also support in the common cause for combating corruption. Next is banking and finance. SEBI has amended the delisting regulations and has introduced fixed price process for voluntarily delisting. I repeat, SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, they have amended the delisting of the equity shares regulations of 2024 and has now allowed the companies to delist their shares through a fixed price process as an alternative to the reserve book building process. This method will basically help in facilitating the ease of doing business. If we talk about this here, you can see as per the framework, the promoters now can offer to buy back all the publicly held shares at a price that is at least 15% higher than the fair price of that particular stock. And the new framework will be applicable to only those companies whose shares are frequently traded. This new framework has specified that in the case the acquirer has proposed delisting through a fixed price process, the acquirer will provide a fixed delisting price which will be at a minimum 15% more than the floor price calculated in terms of regulations 19A of these regulations. Apart from this, the floor price cannot be lower than the highest paid in the acquisitions made during the last 26 weeks preceding the reference date, and SEBI has also reduced the limit for delisting the success under the reserved book building process from 90% to just 75% of the public shareholder participation, provided that the minimum 50% of the public shareholding has been tendered. Correct? Apart from this, one more thing that you need to remember, the new fixed price process is estimated to save 200 crore rupees over the next 5 years due to the lower operational expenses. Next is IDBI Bank. They have launched OTS scheme for retail NPA borrowers to boost recovery. IDBI Bank, so they have recently launched OTS. What is OTS? One time settlement. Correct? So IDBI Bank, they have launched a Sugam scheme that is a one-time settlement scheme. Correct? That is aimed at recovering the non-performing retail loans. The scheme is available to borrowers with outstanding principal that is between 10 lakh rupees to 10 crore rupees. This is offering relaxed terms for the loans classified as non-performing assets. Correct? And the scheme will run from 2nd of September, mark this date, from 2nd of September 2024 till 25th of March
2025. This scheme will provide distressed borrowers a chance to settle their dues and avoid any legal compliances. Also, it will address the long pending cases by the facilitating recovery for retail non-performing assets. And here the borrowers, they must pay at least 10% of the settlement amount by 31st of December 2024 with the balance due within 90 days of the letter of approval without interest. Apart from this, the balance can be paid by 25th of March 2025 with an interest rate based on 1 year MCLR as of August 2024 plus 2% simple interest beyond 90 days from the letter of approval. Correct? So simply remember, Sugam scheme, that is a one-time settlement scheme, has been launched by which bank? It is IDBI Bank. If we talk about IDBI Bank, who is the Chief Executive Officer here? Rakesh Sharma. Headquartered in Mumbai, Maharashtra, and established in 1964. Next is MMRDA has secured 31,679.79 crore rupees loan from PFC to fast track the Mumbai's 9 infrastructure projects. So in order to fast track the development of the 9 infrastructures project in the Mumbai metropolitan region, MMRDA is your Mumbai Metropolitan Region Development Authority. They have secured a loan worth 31,673.79 crore rupees from PFC. What is PFC? Power Finance Corporation. Correct? And as per the agreement here, 80% of the total project cost will be covered by the loan, while the remaining 20% will be financed by the government grants and the MMRDA contribution. Apart from this, the major amount of the sanction loan, that is around 15,071 crore rupees, will be allocated for Thane Borivali Twin Tunnel project, and the remaining 16,602 crore rupees will be used for multiple projects. Moving on, if we talk about PFC, Power Finance Corporation, who is the chairman and managing director here? Parminder Chopra, headquartered in New Delhi and established in 1986. Next is economy and business. BEL, that is Bharat Electronics Limited. They are set to enter space sector and they have signed an agreement with Canada's Reliasat. Right? So this Reliasat, this is a company of Canada. And from India, it is BEL, that is Bharat Electronics Limited. Remember, this is a Navratna public sector undertaking. This comes under the Ministry of Defence, and they have signed a teaming agreement with the Reliasat Incorporation of Canada to collaborate in the area of space products. And this contract was signed as Bengaluru, Karnataka. Apart from this, remember the agreement, this aims to leverage the capabilities of these both companies in the domain of space. And we also know that Government of India has allowed how much percent FDI in space sector? So 100% FDI has been allowed by the Government of India in space sector. Next is science and technology. ISRO, in space, and NSIL, they have signed 5 TTA with the non-government entities. What are the TTAs? That is technology transfer agreements. Why technology transfer agreements are signed? Basically, this enhances the manufacturing process, right? It will help us to foster innovation as well as the commercial applications across various sectors. So ISRO, that is Indian Space Research Organization. InSpace, that is the commercial arm of ISRO, that is Indian National Space Promotion and Authorization Center, and New Space India Limited, NSIL, they have signed 5 technology transfer agreements with the non-government entities. That means these are the private companies, and when the private companies get these orders, they will basically enhance the production process, they will commercialize it, and we will be seeing the use cases of those technologies in the market. Correct? Next is China. They have successfully launched 6 new satellites. Correct? I repeat, China, they have successfully launched 6 new satellites, that is Jillian 1, Guangfu, from 01 to 06. These 6 satellites has been launched from China, North China's Shaanxi province. And here you can see these satellites here. Moving on, next is related to sports. Dwayne Bravo has retired from all the forms of cricket and has joined Kolkata Knight Riders as a mentor. Who was the mentor of Kolkata Knight Riders before Dwayne Bravo? So he was Gambhir, Gautam Gambhir. And we know that Gautam Gambhir has now been appointed as the coach of India's men's cricket team. So in his place now Dwayne Bravo has been appointed as the mentor of Kolkata Knight Rider. Correct? Take a note of this.
Earlier, Dwayne Bravo, he used to work as the bowling coach of the Chennai Super Kings, and now he is the mentor of the Kolkata Knight Rider. Next is Obituary. Oscar-winning British actor, Harry Potter star, as you can see here in the picture, Dame Maggie Smith has recently passed away. Can you tell me the character name of Dame Maggie Smith, right, in Harry Potter series? What was the character name? This will be an interesting and a good question for you all, right? So she has recently passed away, right, and she passed away at the age of 89 in London, UK. Correct? Take a note of this. Apart from this, she has also won 3 Golden Globe Awards. That includes your Best Actress for Motion Pictures Comedy. And apart from this, she has also won 5 BAFTA Awards. That is British Academy of Film and Television Awards. Next is books and authors. Arundhati Roy's first memoir, that is Mother Mary Comes to Me, to release in September 2025. This is the name of the book, that is Mother Mary Comes to Me, and it has been authored by whom? Arundhati Roy, and she will be publishing her first memoir titled Mother Mary Comes to Me. It will be published in September 2025. The book will be published by Penguin Random House. This book will basically talk about that how Arundhati Roy became the person and the person she is and the writer she is. And this book was inspired by the death of her mother and women's rights activist Mary Roy in September 2022. Also, Arundhati Roy, she has won Booker Prize for the novel The God of Small Things in 1997. Next is important days. World Contraception Day observed on 26th of September. This day is observed to improve awareness of all the contraceptive methods that are available and enable young people to make informed choices on their sexual and reproductive health. Also, this day, 26th of September, is observed as the 18th World Contraceptive Day. The theme for this day is A Choice for All, Freedom to Plan, Power to Choose. And the first ever World Contraceptive Day was observed in the year 2007. Next is World Rabies Day. It is observed on 28th of September, and rabies is basically a viral disease that is caused by the bite of dogs. Correct? So basically we can say this day is observed, that is 28th of September is observed as World Rabies Day. This is a zoonotic disease. Why is zoonotic disease and what are zoonotic disease? Zoonotic disease are those diseases that are spread from animals to humans. Right, that are your zoonotic disease, and rabies is a zoonotic disease. We observed the 18th edition of this World Rabies Day in 2024, and there was a theme for this day, for World Rabies Day, that is Breaking Rabies Boundaries. Here you can see Breaking Rabies Boundaries. This is the theme here for the World Rabies Day of the 18th edition of the World Rabies Day. So that's all for the day, students. Now let's move to the one-liners. PM Modi laid the foundation stone and dedicated projects worth 11,200 crore rupees in Maharashtra. Then Professor SP Singh Baghel has inaugurated National Conference on PESA Act. Then India has been ranked 39th in the Global Innovation Index, whereas Switzerland has secured the first position 14th consecutive time. Next, India has elected to the steering committee of the Globe Network. SEBI has amended the delisting regulations and has introduced fixed price process for voluntary delisting. Then IDBI Bank has launched OTS scheme for retail NPA borrowers to boost recovery. MMRDA has secured 31,673.79 crore loan from PFC to fast-track Mumbai's 9 infrastructure projects. BEL, that is Bharat Electronics Limited, is set to enter space sector and has signed a contract with Canada's Reliasat. Then ISRO, InSpace and NSIL, they have signed 5 technology transfer agreement with non-government entities to start their commercial production. Then China successfully launched 6 new satellites. Next is Dwayne Bravo, a very famous player from West Indies, has now been appointed as the mentor of Kolkata Knight Riders after Gautam Gambhir, who was the mentor of KKR, has become the coach of India's men's cricket team. Then Oscar-winning British actor and Harry Potter famous star Dame Maggie Smith has recently passed away. Arundhati Roy's first memoir, Mother Mary Comes to Me, to release in September 2025. World Contraception Day on 26th of September and World Rabies Day on 28th of September.
So that's all for the day, students. Now let's move to revision part. Name the spacecraft that has recently become India's first space-based solar observatory mission to complete the first halo orbit around the Sun Earth Lagrange 1 point. What is the name of the spacecraft that was placed on this L1 point to study the surface of Sun? What is the name of that mission? It is Aditya L1 mission. It was launched by ISRO. Correct, and it has recently completed the first halo orbit around the Sun Earth L1 point, that is Lagrange 1 point, and this Aditya L1 will study the surface of the Sun. Next, name the organization that recently, in partnership with Blue Origin, announced India as a partner nation in their human spaceflight program. What is the name of that organization? It is SERA, Space Exploration and Research Agency. They have recently partnered with Blue Origin and have announced India as their partner nation in their human space flight program. Right? Under this partnership, SERA will offer citizens from across the world 6 seats on future missions of New Shepard Blue Origin's reusable suborbital rocket. Beside India, Nigeria, Maldives, they have been allotted with a seat on this mission of Blue Origin. And here the rockets, or here these astronauts, 6 selected astronauts, will be on a fly mission of 11 minutes into the space using this Shepard rocket of New Origin or Blue Origin. Next, NASA is set to launch a telescope that has been named DASH in 2040 to find proof of extraterrestrial life that are aliens and inhabited planets beyond our solar system. So what is the name of that telescope? It is Habitable Worlds Observatory. This is the name of the telescope that will be launched by NASA. It will be launched in 2040 and it will be studying aliens. It will be finding the life or extraterrestrial life, and it will be finding aliens and inhabited planets that are beyond our solar system. Next, in July, Roscosmos, that is Russia's space organization, they have approved the schedule for the creation of Russian orbital station by which year? So this Russian orbital station will be scheduled to be completed by 2033 and it will be a space station of Russia. Your homework is name the space station of India. Right, there will be 5 modules in this space station of Russia, and when will be the first module launched and what is the expected date? Also give me the name of this space station. This is your homework. Next, Turkey, they have launched the first indigenously developed communication satellite by the name Turksat-6A through Space Exploration Technologies Falcon 9 rocket. Question asked is that this Turksat-6A has been developed by which organization? So this Turksat-6A is developed by Aselsan. Right, it is developed by Aselsan. Next, France, Germany, Italy and Poland, they have signed a letter of intent to jointly develop DASH during the NATO's 75th anniversary summit that was held in Washington DC, USA. So France, Germany, Italy and Poland, they have signed a letter of intent to jointly develop this long-range cruise missile. Right, and this was signed during the NATO's 75th anniversary summit that was held in Washington DC. Your another homework is to tell me who is the new Secretary General of NATO. Next, name the European Space Agency's new heavy lift rocket that has been recently launched into space for the first time from Europe's spaceport in French Guiana. Name of that is Ariane 6. Correct, it is ESA, European Space Agency. Their new heavy lift rocket has been launched into space for the first time. Correct, and French Guiana was an observer department of France in South Africa from where this was launched. This is a 63-meter tall rocket and it has been built with an estimate of 4 billion euros. Next, name the company that recently launched 4 new anti-drone products, namely Hawkeye, Barbaric, Sthirstep 640 and Prashastha. So which is that company? They have launched these 4 new anti-drone products. So they have been launched by Zen Technologies Limited. Correct, and remember here Hawkeye, this is a state-of-the-art anti-drone system with various sensor detection modules. Correct. Also, if we talk about this Barbaric is the world's lightest remote controlled weapon station. Then if we talk about Prasastha, this is an autonomous quadruped that uses light detection and ranging, that is
LiDAR technology. So question can be asked, which of the following is a product that has been launched by Zen Technologies Limited that uses LiDAR technology? It is Prasastha. Correct. This will be used basically for real-time 3D terrain mapping and also for navigation and threat assessment. Now students, let's move to the homework part. You have to give me 3 current affairs related to national affairs. Also students, if you find the session, do hit the like button and do comment below and let us know what are your views for the same. Doing this, it will motivate me to make better content for you in the long run. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs. The content we provide is very interesting and it is provided at 5 a.m. in the morning on daily basis. The content will help you in scoring good marks in your competitive exams. So now students, let's move to the Hindi segment of this video. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 2 और 3 अक्टूबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन PESA एक्ट को इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। देन हम बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, इंडिया की क्या रैंक रही, किसने टॉप किया। देन हम बात करेंगे इंडिया अभी सेलेक्ट किया गया स्टीयरिंग कमेटी पे ऑफ द ग्लोब नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या है, किस लिए है, क्या यूज़ है इस नेटवर्क का, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा। 15 करंट अफेयर्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। जो कंटेंट हम आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं, टॉप नॉच कंटेंट रहता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प रहेगी। इवन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देखने को मिलते हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमारी PDF में से देखने को मिलेंगे, जो कि आप डेली करंट अफेयर्स क्विज जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे से, इवन हमारी वेबसाइट पे से। तो चलिए स्टूडेंट्स अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हम बात कर रहे हैं नेशनल अफेयर्स की। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किए एंड डेडिकेट किए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्थ 11,200 करोड़ रुपीस। कहां पर? महाराष्ट्र में। पहला इसमें से हम देखेंगे पुणे मेट्रो सेक्शन, करेक्ट, जो कि है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वरगेट, इसको इनॉग्रेट किया गया। ये मार्क करता है कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। देन इसी के साथ साथ PM मोदी ने डेडिकेट किया बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया को, जो कि महाराष्ट्र में रहेगा। यहीं पे इन्होंने सोलापुर एयरपोर्ट एंड इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया सोलापुर एयरपोर्ट, एज वेल एज इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया मेमोरियल फॉर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की पहले गर्ल्स स्कूल्स को, जो कि भिडेवाड़ा में है। राइट, इनको डिटेल में देखें तो ये जो बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, ये आपका 7,855 एकर्स का एरिया रहेगा अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 20 किलोमीटर सिचुएटेड है ऑफ द साउथ ऑफ छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में। देन बात करें सोलापुर एयरपोर्ट की। सोलापुर एयरपोर्ट यहाँ पर हम 4.1 लाख पैसेंजर्स एनुअली हैंडल करेंगे एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि जो सोलापुर है उससे एक्सेस बहुत अच्छी हो जाएगी, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी टूरिस्ट के लिए, बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं पे हम बात करेंगे मेमोरियल फॉर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की पहले गर्ल्स स्कूल की। ये गर्ल्स स्कूल आपका कहाँ पर रहेगा? भिडेवाड़ा में। ठीक है, यहीं पर अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करूँ तो महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन रहने वाले हैं यहाँ पर? वो हैं CP राधाकृष्ण। एयरपोर्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर?
जैसे हम बात करें अकोला एयरपोर्ट, औरंगाबाद एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन यहीं पे यूनेस्को हेरिटेज साइट है कौन सी, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पीईएसए एक्ट, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। सबसे पहले तो ये पीईएसए क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पीईएसए है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। पीईएसए एक्ट 1996 में आया था। इसकी अभी हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल देखने को मिला है, कहां पर, न्यू दिल्ली में। एंड पहली चीज तो ये याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में भी कहां पर लोकेशन क्या रहेगी, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंट्रल, जो कि न्यू दिल्ली में, वहां पर इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। किनके द्वारा, प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल के द्वारा। इसी के अलावा याद रखेंगे इन्होंने अभी लॉन्च किया जीपीडीपी पोर्टल को। पोर्टल क्या होता है, एक वेबसाइट होती है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, आई रिपीट पीईएसए, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पोर्टल को यहां पे लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ 7 एक्शन ओरिएंटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को भी यहां पे लॉन्च किया गया। ट्रेनिंग मॉड्यूल बेसिकली आप कह सकते हैं पीडीएफ्स हैं, ऑनलाइन आपका कंटेंट रहेगा, मॉड्यूल्स रहेंगे जो कि लोगों को यहाँ ट्रेन करने का काम करेंगे कि कैसे हम पंचायती एरियाज में डेवलपमेंट ला सकते हैं। इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इंट्रोड्यूस किए इनिशिएटिव्स जैसे फंक्शनल एक्टिविटी मैपिंग डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग स्टेट एक्शंस ऑन 29 सब्जेक्ट, जो कि आउटलाइन किए गए हैं 11 शेड्यूल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसी के अलावा प्रधानमंत्री जनमन योजना, सबसे पहले तो ये देखेंगे प्रधानमंत्री जनमन योजना है क्या, ये किसके लिए लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का मेन एम है आपका कि जो असेंशियल एमिनिटीज हैं, राइट, जो कि आपके पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको बेसिक एमिनिटीज जैसे फॉर एग्जांपल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, राइट, एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, रोड्स वहां तक पहुंच सकें, तो ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए जनमन योजना को लॉन्च किया गया था। इसके लिए सरकार ने 24,104 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए। फिर आ जाता है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना। इसके लिए सरकार के द्वारा 79,156 करोड़ अलोकेट किए गए, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 56,000 करोड़ एंड स्टेट गवर्नमेंट 22,000 करोड़ यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी। एंड इस स्कीम का मेन एम क्या है, टू इंप्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। तो सिंपल टर्म्स में बोले तो अपलिफ्टमेंट के लिए सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं ट्राइबल कम्युनिटीज की, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई थी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर्स पर। तो इंडिया रैंक 39th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जहां पे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया फॉर द 14th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, राइट। तो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, राइट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसका याद रखेंगे 17th एडिशन रहेगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया, राइट। एंड हमारे इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस इंडेक्स में, 39th। टॉप किसने किया, स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे टॉप किया, मतलब इनकी फर्स्ट पोजीशन रही। एंड 14th कॉन्जिक्यूटिव टाइम यहाँ पर इनके द्वारा टॉप किया गया है। इवन अगर हम इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो बेसिकली कितनी हमें इनोवेशन देखने को मिल रही हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, कि क्या क्या नए नए यूज केसेस यहाँ पर आ रहे हैं, कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सी कंट्री किन किन सेक्टर्स में कर रहे हैं, उनके ऊपर यहाँ पे कंपाइल करके डाटा को रिलीज किया जाता है। यहीं पर आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड फर्स्ट, सेकंड स्वीडन, थर्ड यूएसए, फोर्थ सिंगापुर, फिफ्थ यूके एंड 39th पोजीशन पे हमारा आ जाता है इंडिया, ठीक है। अगर मैं वीपो की बात करूं जिनके द्वारा ये 17वां एडिशन ऑफ दिस इंडेक्स रिलीज किया गया, तो वीपो की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, वो है डैरेन टैंग। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एंड इसको 1967 में इस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पे याद रखेंगे, इंडिया की रैंक 1 आई है इन द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की कंट्रीज का। अगर हम डाटा देखें उसमें इंडिया ने टॉप किया 14th कॉन्जिक्यूटिव टाइम में। एज वेल एज अगर हम बात करें इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में ऑफ वीपो, तो इंडिया की 4th पोजीशन आई है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के हिसाब से। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई 56th रैंक,
दिल्ली 63rd, बेंगलुरु कर्नाटका 82nd, चेन्नई तमिलनाडु 84th एंड टोक्यो योकोहामा ऑफ जापान इनकी फर्स्ट पोजीशन रही यहाँ पर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया को भी इलेक्ट किया गया टू द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द ग्लोब नेटवर्क। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये ग्लोब नेटवर्क क्या होता है। ग्लोब नेटवर्क है ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क फॉर एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट एक्टिविटीज। तो करप्शन को रोकने के लिए ग्लोबल स्केल पर एंड कंट्रीज मिलकर करप्शन को रोक सके। मतलब कई बार क्या होता है कि इंडिया में करप्शन किया किसी ने, वो जाके यूके में, वो जाके जापान में, वो जाके इंग्लैंड में, यूएसए में कहीं पे सेटल हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे में कंट्रीज मिलकर अपने कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे करप्शन को रोक सकें। एंड अगर कोई करप्शन करता है तो वहाँ पर लोगों को कंट्रीज, जो एक दूसरी कंट्रीज की एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको हेल्प करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सके, राइट। तो बेसिकली करप्शन को रोकने के लिए ये ग्लोब नेटवर्क बना एंड इसकी स्टीयरिंग कमेटी में इलेक्ट कर लिया गया है इंडिया को। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। 15 मेंबर की ये ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी रहेगी एंड इंडिया यहाँ पर अभी मेंबर बन गया है। ये मेंबर इंडिया कब बना? ये एक मीटिंग हमें देखने को मिली थी अभी बीजिंग चाइना में, जो थी आपकी 5th प्लेनरी मीटिंग एंड 8th स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ग्लोब नेटवर्क की बीजिंग चाइना में, जिसके दौरान ये डिसीजन लिया गया। एंड इस ग्लोब नेटवर्क की बात करें, जून में 2021 में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग अ स्पेशल इवेंट एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्पेशल सेशन अगेंस्ट करप्शन, करेक्ट। एंड यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया की ये सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी फॉर ग्लोबल नेटवर्क इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। तो सीबी के द्वारा भी अमेंड किए गए हैं डीलिस्टिंग रेगुलेशंस को एंड इंट्रोड्यूस किया गया है फिक्स प्राइस प्रोसेस को वॉलंटरी डीलिस्टिंग के लिए, राइट। अब इससे क्या होगा कि जो कंपनीज हैं वो डीलिस्ट कर सकेंगे अपनी शेयर को थ्रू अ फिक्स प्राइस प्रोसेस एज एन ऑल्टरनेटिव टू द रिजर्व बुक बिल्डिंग, करेक्ट। एंड इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा फॉर द लिस्टेड फर्म्स। अगर यहाँ पे हम बात करें डिटेल में, एज पर द फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो जो प्रमोटर्स हैं वो दे कैन ऑफर टू बाय बैक, अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकते हैं पब्लिकली हेल्ड शेयर्स को एट अ प्राइस दैट इज 15% हायर देन द फेयर प्राइस ऑफ दैट स्टॉक। मतलब अगर जो भी फेयर प्राइस चल रहा है उस स्टॉक का मार्केट में, उसके 15% हायर पर जो प्रमोटर्स हैं वो अपने स्टॉक को वापस से बाय बैक कर सकेंगे, करेक्ट। ये जो नया फ्रेमवर्क है ये एप्लीकेबल होगा उन कंपनीज को जिनके ट्रेड्स फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं। एंड ये जो नया फ्रेमवर्क है इन्होंने स्पेसिफाई किया कि जो एक्वायरर है दे हैव प्रपोज्ड डीलिस्टिंग थ्रू अ फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस एंड जो एक्वायर रहेगा दे विल प्रोवाइड अ फिक्स्ड डीलिस्टिंग प्राइस जो कि आपका एट अ मिनिमम 15% मोर देन द फ्लोर प्राइस रहेगा, ठीक है। इसी के अलावा जो फ्लोर प्राइस है इट कैन नॉट बी लोअर देन द हाईएस्ट पेड इन द एक्विजिशंस ड्यूरिंग द लास्ट 26 वीक्स। पिछले 26 वीक्स में से जो ट्रेड हुआ है उससे नीचे वो आपका फ्लोर प्राइस नहीं होता, हो सकेगा उससे ऊपर ही वो फ्लोर प्राइस रहेगा, ठीक है। चलिए एक और चीज, यहाँ पे जो ये न्यू फिक्स प्राइस प्रोसेस आई ना, ये एस्टिमेट करता है कि ये सेव करेगा मोर देन 200 करोड़ रुपीज ओवर द नेक्स्ट 5 years ड्यू टू लोअर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है आईडीबीआई बैंक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, आईडीबीआई बैंक के द्वारा अभी एक सुगम स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये सुगम स्कीम क्या है? बेसिकली सुगम ऋण भुगतान योजना, राइट। ये एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम रहेगी, ओटीएस स्कीम रहेगी, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। ये बेसिकली स्कीम रहेगी आपके फॉर रिकवरिंग द नॉन परफॉर्मिंग रिटेल लोन्स के लिए। नॉन परफॉर्मिंग रिटेल लोन्स के लिए स्कीम रहेगी कि आप एक बारी में सेटलमेंट कर दो, जिनका प्रिंसिपल 10 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ के बीच में है, राइट। वो यहाँ पे उनको काफ़ी सारे एंड वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंडर आ जाते हैं, उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड 10 लाख से 10 करोड़ के बीच में जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जिन्होंने 31 मार्च 2021 से लेके 31 अगस्त 2024 के बीच में लोन लिया एंड वो अपना लोन अब सेटल करना चाहते हैं, उसके लिए ये स्कीम रहेगी, उनके द्वारा लॉन्च की गई है। 2 सितंबर 2024 से लेके 25 मार्च 2025 तक ये स्कीम आपकी लागू रहेगी। इसके अंडर जो बॉरोवर्स हैं दे मस्ट पे एटलीस्ट 10% ऑफ द सेटल्ड अमाउंट बाय 31 दिसंबर विद द बैलेंस ड्यू विद इन द 90 डेज ऑफ द लेटर ऑफ अप्रूवल। इंटरेस्ट के साथ उन्हें यहाँ पे करना पड़ेगा। इसी के अलावा आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटिवली जो बैलेंस कैन बी पेड बाय 25 मार्च विद एन इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन द 1 year MCLR एज ऑफ अगस्त 31 2024 प्लस 2% सिंपल इंटरेस्ट रहेगा बियॉन्ड द 90 डेज फ्रॉम द लेटर ऑफ अप्रूवल।
अगर आईडीबीआई बैंक की मैं बात करूं, राकेश शर्मा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। एंड इस्टेब्लिश किया गया है इसको 1964 में। नेक्स्ट आ जाते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने सिक्योर किया लोन वर्थ 31,673.69 करोड़ रुपीस। ये लोन इन्होंने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से लिया है ताकि मुंबई में जो 9 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप किया जा सके। उनकी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई। इसमें से हम देखेंगे 15,071 करोड़ रुपए तो थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट के लिए रहेंगे। बाकी 16,602 करोड़ रुपए आपके डिफरेंट 8 जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए यहाँ पे यूज किए जाएंगे। अगर मैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? परमिंदर चोपड़ा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड 1986 में इसको एस्टैब्लिश करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इन्होंने अभी एक टीमिंग अग्रीमेंट साइन किया है रेलियसेट के साथ, जो कि रेलियसेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कनाडा रहेगी। ये कंपनी कनाडा की कंपनी है। इन दोनों के द्वारा ये अग्रीमेंट साइन हुआ, बेसिकली टीमिंग अग्रीमेंट, ताकि स्पेस सेक्टर में ये काम कर सकें। स्पेस सेक्टर में जो भी दोनों की कैपेबिलिटीज़ हैं उसको लेवरेज कर सके, हम कैसे स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके ऊपर ये दोनों कंपनियां यहाँ पे काम करेंगी, रेलियसेट एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। इसरो, इनस्पेस, NSIL, करेक्ट, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी 5 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किए गए हैं नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ। देखो हमेशा याद रखना, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट्स होते हैं ना, ऐसी DRDO हो गई, इसरो हो गई, इनस्पेस, NSIL, CSIR, राइट, इनके द्वारा, ICMR के द्वारा, तो इनका बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट किया जाता है ताकि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे ना उसका कमर्शलाइजेशन हो सके जल्द से जल्द। एंड अगर हमें उसमें कोई प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो जल्दी पेस पे हो सके। फॉर एग्जांपल मान लो DRDO के द्वारा कल को कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया गया एंड उनको बहुत जल्दी उनकी प्रोडक्शन चाहिए, तो वो किसी थर्ड पार्टी, किसी प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कर सकते हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन और जल्दी हो सके, ज़्यादा जल्दी से जल्दी वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स को बना सके, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ अग्रीमेंट साइंड पोस्ट स्पेस आपके जो रहेंगे वो 75 रहेंगे यहाँ पर, करेक्ट। मेन 5 आपके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगे यहाँ पे। बेसिक चीज़ तो याद रखनी है सबसे पहले कि 5 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट हुए हैं, राइट। और जो टोटल नंबर ऑफ अग्रीमेंट्स अभी तक हम देखेंगे तो वो 75 हो चुके हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट। यहाँ पर हम देखेंगे इससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया, एक तो इनोवेशन बढ़ेगी क्योंकि अब क्या होगा, ये जो टेक्नोलॉजी है प्राइवेट कंपनीज के पास जाएंगी, वो इनका यूज़ केस यहाँ पे बनाएंगी, यूज़ केस देखेंगी तो फिर वो प्रोडक्ट्स बनाएंगी या फिर कोई सर्विस बनाएंगी जो कि वो मार्केट में प्रोवाइड कर सकेंगी कस्टमर्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर चाइना के द्वारा भी 6 नई सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं। जिलियन 1 क्वांगफू 02B की ये 6 सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च की गई हैं फ्रॉम नॉर्थ चाइना शेंगजी प्रोविंस। एंड लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट की मदद से इनको स्पेस में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। तो ड्वेन ब्रावो, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड इन्होंने ज्वाइन किया कोलकाता नाइट राइडर को एज अ मेंटर। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट। कोलकाता नाइट राइडर के पहले मेंटर कौन थे? वो थे गौतम गंभीर, लेकिन फिर अब वो क्या बन गए हैं? कोच बन गए हैं इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम के। तो अब वो कोच बन गए हैं, तो अब उनकी जगह कौन आ गए हैं फिर मेंटर के तौर पर? वो हैं ड्वेन ब्रावो, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इससे पहले ये चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच थे, अब ये कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर बन गए हैं। एंड ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। ये काफ़ी फेमस एक्टर हैं, राइट। एंड इन्होंने हैरी पॉटर सीरीज में एक टीचर का रोल प्ले किया। उन टीचर के रोल का नेम, जो कैरेक्टर का नेम था ना, वो मुझे आप नीचे कमेंट में बताओ। बहुत फेमस कैरेक्टर ये हैं, करेक्ट। एंड ऑस्कर विनिंग ब्रिटिश एक्टर हैरी पॉटर स्टार डेम मैगी स्मिथ, इनका निधन हो गया है, राइट। एंड इनका निधन अभी हमें 89 की एज में देखने को मिला इन लंदन, UK। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। अरुंधति रॉय, इनका फर्स्ट मेमोयर आया है मदर मैरी कम्स टू मी एंड ये रिलीज़ किया जाएगा सितंबर 2025 में। इसको पब्लिक रैंडम हाउस, पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। इस बुक में इन्होंने बताया है कि कैसे ये एक राइटर बनी, ये कैसी एक पर्सन है अपनी ज़िंदगी में, रियल लाइफ में, एंड किस तरह की ये राइटर हैं, करेक्ट। एंड ये जो बुक है ये इंस्पायर्ड है बाय द डेथ ऑफ हर मदर एंड वीमेंस राइट एक्टिविस्ट मैरी रॉय, सितंबर 2022 में। इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है 1997 में फॉर द नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत फेमस नॉवल है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए।
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 26 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन आपकी बेसिकली वो मेथड्स होते हैं जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, राइट। तो ये आपका होता है बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड यंग पीपल को इन्फॉर्म चॉइसेस बनाने के लिए अबाउट देयर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये कॉन्ट्रासेप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इसीलिए वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे हम 26 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इस बार हमने इसका 18th वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे ऑब्जर्व करा, जिसकी एक थीम रहेगी अ चॉइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्लान, पावर टू चूज। ये थीम रहेगी यहाँ पर वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे की। पहली बार वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2007 में इसको पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड रेबीज डे। 28 सितंबर को यह डे ऑब्जर्व किया जाता है रेबीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। रेबीज एक वायरल जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब जो डिजीज एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलती है, करेक्ट। एंड बेसिकली डॉग्स की बाइट से ये आपकी डिजीज फैलती है, या फिर हम बोले जो आपके रेबीज होते हैं डॉग से ह्यूमंस में फैलते हैं, करेक्ट। एंड ये जो डे है इट मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लुइस पैस्चर, जो कि वेरी फेमस केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली रेबीज वैक्सीन बनाई थी 1885 में। इस बार हमने 2024 में 18th एडिशन इस डे का ऑब्जर्व करा है वर्ल्ड रेबीज डे का। एंड थीम क्या रहेगी वर्ल्ड रेबीज डे की? वो है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। तो मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर्स पर। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट किया वर्थ 11,200 करोड़ रुपीज इन महाराष्ट्र। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पैसा एक्ट इन न्यू दिल्ली। देन इंडिया रैंक 39th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वेयर स्विट्जरलैंड की फर्स्ट पोजीशन रही 14th कॉन्सिक्यूटिव टाइम। इंडिया इलेक्ट किया गया टू द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ ग्लोब नेटवर्क, जो कि करप्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। देन सेबी ने अमेंड की डीलिस्टिंग रेगुलेशंस को एंड इंट्रोड्यूस किया फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग्स। देन आईडीबीआई बैंक ने लॉन्च किया ओटीएस स्कीम फॉर रिटेल एनपीए बोरोवर्स टू बूस्ट रिकवरी। एमएमआरडी ने सिक्योर किया 31,673 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉम पीएफसी टू फास्ट ट्रैक मुंबईज 9 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेट टू एंटर स्पेस सेक्टर एंड इन्होंने साइन किया एक अग्रीमेंट विद कैनेडाज रिलायसेट। देन इसरो इन स्पेस एनएसआईएल इन्होंने 5 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किए नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज मतलब प्राइवेट एंटिटीज के साथ, ताकि कमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च की 6 नई सैटेलाइट्स को। देन डेन ब्रावो इन्होंने रिटायर किया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड ज्वाइन किया कोलकाता नाइट राइडर को एज अ मेंटर इन प्लेस ऑफ गौतम गंभीर, जो कि इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं। ऑस्कर विनिंग ब्रिटिश एक्टर एंड हैरी पॉटर स्टार डेम मैगी स्मिथ इनका रिसेंटली निधन हो गया। अरुंधति रॉय अपना पहला मेमोयर लॉन्च करेंगी मैरी कम्स टू मी, सितंबर 2025 में पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। देन वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नासा लॉन्च करेगा भी एक टेलीस्कोप जिसका नाम क्या रहेगा, जो 2040 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि एलियंस को एंड इनहेबिटेड प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड है उनको स्टडी करने का काम करेगा। तो क्या नाम रहेगा इस टेलीस्कोप का? हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ जिसको हम एलियंस कहते हैं इनको सर्च करने का काम करेगा। 2040 में इसको लॉन्च किया जाएगा एंड किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन जुलाई 2024 रोसकॉस्मोस जो रशिया की स्टेट कॉर्पोरेशन है फॉर स्पेस एक्टिविटीज़ या फिर रशिया की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने बोला कि हम रशियन ऑर्बिटल स्टेशन को लॉन्च करेंगे कब तक? 2033 तक। याद रखेंगे ये स्पेस स्टेशन रहेगा रशिया का रशियन ऑर्बिटल स्टेशन। यहीं पे आप मुझे बताओ इंडिया के स्पेस स्टेशन का क्या नाम रहेगा? अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था इसके बारे में एंड इसमें 5 मॉड्यूल्स रहने वाले हैं एंड इसी के साथ साथ बताओ कि ये जो मॉड्यूल्स हैं, जो फाइनल मॉड्यूल है वो कौन से ईयर में भी लॉन्च किया जाएगा? तो ये आपका होमवर्क रहेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट टर्की, इनके द्वारा पहली इंडिजीनियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जिसका नाम है टर्क सेट 6A। इसको स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। तो ये जो टर्क सेट 6A है ना, इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? एसएलसेन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड पोलैंड इन्होंने भी एक LOI लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया कि ये जॉइंटली डेवलप करेंगे क्या, एंड ये जो
इनिशियल लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है ड्यूरिंग द नेटो 75th एनिवर्सरी समिट जो कि वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुई थी उसके दौरान। तो इन्होंने जॉइंटली डेवलप यहाँ पे जॉइंटली एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया जो कि आपका लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए, राइट। अभी हम जानते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड वाइड, तो ऐसे में ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए इन्होंने ये एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। किन कंट्रीज ने? फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड पोलैंड ने। नेक्स्ट, उस यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नए हैवी लिफ्ट रॉकेट का नाम बताओ दैट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड इनटू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम यूरोप स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गिनिया। फ्रेंच गिनिया से इसको लॉन्च किया गया था। पूछा जा रहा है कि उस हैवी लिफ्ट रॉकेट का नाम बताओ जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है एरियाना 6 रॉकेट। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च द 4 न्यू एंटी ड्रोन प्रोडक्ट जिनका नाम है हॉकाई, बारबरिक, स्थिर स्टेप 640 एंड प्रशस्ता। तो किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें जेन टेक्नोलॉजीज, ये एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है पुणे महाराष्ट्र में। इन्होंने ये 4 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए हैं। हॉकाई जो रहेगा ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम रहेगा विद न्यूमरस सेंसर्स। बारबरिक ये वर्ल्ड का लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन रहेगा। स्थिर की बात करें ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल रहेगी। एंड प्रशस्ता की बात करें ये यूज करेंगे लाइडा टेक्नोलॉजी को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं उसमें से लाइडा टेक्नोलॉजी कौन यूज करेगा? तो प्रशस्ता ये लाइडा टेक्नोलॉजी यूज करेगा फॉर डिटेक्शन ऑफ वेरियस थ्रेट्स। अगर लाइडर की बात करें, लाइडर क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, मतलब लाइट को छोड़ा जाता है, राइट, किसी पॉइंट पे पॉइंट किया जाता है, जब वो वहां से वापस टकरा के आती है तो उनका जो डिस्टेंस नापा जाता है उसके बेसिस पे यहाँ पर आपकी सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो ये है लाइडा टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया ऑथराइजेशन फ्रॉम इन स्पेस टू प्रोवाइड ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस? तो किस कंपनी ने ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया है इन स्पेस के द्वारा? किसको मिला ये ऑथराइजेशन? ये है ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड को ये अभी अप्रूवल मिल गया फ्रॉम इन स्पेस कि ये ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा? जो डाटा ट्रांसमिशन और अच्छा हो जाएगा, मिशन में फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, जो कम्युनिकेशन है रियल टाइम सैटेलाइट कम्युनिकेशन उसमें हमें ज़्यादा एनहेंसमेंट देखने को मिलेगी। Next, scientists from Dash have recently generated the first undersea map of Ram Setu or Adams Bridge using laser technology from NASA's ICESat-2। तो साइंटिस्ट कहाँ के हैं ये? तो याद रखेंगे नासा के साइंटिस्ट ने अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ब्रिज कहते हैं उसको हम राम सेतु कहते हैं, उसी को हम एडम्स ब्रिज के नाम से कहते हैं, राइट। तो उसका जो अंडरसी मैप है, तो पानी के नीचे जो एरिया है, जो जगह है, जो आपका हम कह सकते हैं जो सरफेस है, उसको मैप किया गया है। एंड उसको मैप किया गया नासा की ICESat-2 सैटेलाइट की मदद से, करेक्ट, ये यूजिंग द लेजर टेक्नोलॉजी। पूछा जा रहा है साइंटिस्ट ये किन के साइंटिस्ट ने? तो नासा के साइंटिस्ट ने ये मैपिंग की है। नेक्स्ट, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 6 नए एक्सोप्लैनेट्स, ये उनके नाम रहेंगे, इनको अभी डिस्कवर किया? तो नासा के साइंटिस्ट के द्वारा ये 6 नए एक्सोप्लैनेट्स को भी डिस्कवर किया गया है। Next, name the high resolution optical Earth observation satellite that was recently launched by China into space using Long March 4B carrier rocket from Taiwan Satellite Launch Center। तो सैटेलाइट का नाम क्या रहेगा? गाओफैन 1105। ये चाइना की सैटेलाइट है, राइट, एंड चाइना की ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है यूजिंग लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट। नेक्स्ट है 3 करंट अफेयर्स आपको बताने हैं रिलेटेड टू नेशनल अफेयर्स। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। बहुत अच्छा कंटेंट डेली बेसिस पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।